तो आइंस्टाइन मॉडल में जो ड्रॉबैक्स हैं उनको दूर करने के लिए Debye came up with a model of specific heat in 1912 जिसको अब हम स्टडी करेंगे. First of all, we shall see what are the assumptions of Debye model. Then we will derive the general formula for specific heat according to Debye's model. Then we shall check behavior of Debye's model in high temperature zone, in the low temperature zone. Then we shall draw a graph for Debye model and we will compare it with the experimentally determined data. And then we shall see what are the drawbacks of Debye model. So let us start. Number one, we will start with the assumptions. According to Debye, solid acts as a continuous medium in which elastic waves propagate. तो इसकी justification ये है कि जब हम एक लैटिस को, एक सॉलिड को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो जिन फ्रीक्वेंसीज के साथ एटॉमिक ऑसिलेटर्स ऑसिलेट करते हैं, दे आर नॉट लार्ज एनफ. So that means the wavelength is large enough, and when the wavelength of the phonons, elastic lattice waves that travel down through the lattice is large enough, then obviously जैसा कि हमने last time elastic waves में पढ़ा, then we can treat the solid as continuous medium. Otherwise we very well know that solid is a discrete medium. हर दो एटम्स के दरमियान गैप होती है. Atoms in the solid oscillate as a system of coupled oscillators. Now there was a faulty assumption जिसको overcome किया है Debye ने. In the Einstein's model there was a faulty assumption कि हर कोई atom independently oscillate करता है, which is faulty assumption. तो इसको यहाँ पे Debye ने correct किया है. Since एक atom जो है, it is bound to other atoms via atomic forces in the lattice, so atoms cannot vibrate independently. तो atoms जो हैं, they vibrate as coupled system. तो consequently atoms vibrate with different frequencies. So we have got a range of frequencies from sound to infrared. The normal modes of vibration belong to the whole assembly. They don't belong to any single atom, but to the whole lattice. The total number of modes is thrice n, where n is the number of atoms in a monoatomic homogeneous solid. इसका logic ये है कि an atom, when it acts as an oscillator, it can oscillate along x-axis, so it is equivalent to one-dimensional oscillator. The same atom can oscillate along y-axis, so the same atom is equivalent to another one-dimensional oscillator, and यही atom ये oscillate कर सकता है along z-axis, so the same atom is equivalent to another one-dimensional oscillator. So that means एक atom बराबर है तीन one-dimensional oscillators के. So एक atom, it has got 3 degrees of freedom, and when there is the total number of atoms in the solid n, so that means the total number of modes of vibration is thrice n. The modes have different energies and different frequencies, but there is a limit to the maximum frequency of the lattice vibration. ये भी हम lattice vibration में पढ़ चुके हैं कि a lattice acts as a low pass filter, 0 से लेके up to a certain frequency की जो waves हैं, की जो vibrations हैं, that can pass through the lattice, but there is a limit to the frequency कि अगर हम उस frequency से ज़्यादा की wave या vibration को pass कराना चाहें through the lattice, that is not possible. So the maximum frequency of the vibration that can pass through the lattice, the maximum frequency with which atoms can oscillate, is called Debye frequency.
So above Debye frequency, no vibration can take place. A solid behaves as an isotropic medium. तो हर किसी डायरेक्शन में ये वाइब्रेशन एक जैसी है. We have to take every direction equivalent. And the medium for elastic waves is non-dispersive. Dispersion नहीं होती है. This is true as far as we take low frequency limit. And the frequency spectrum is discrete. Obviously, there are frequencies, but the frequency spectrum is, there are many frequencies with which the atoms can oscillate, but the spectrum is discrete. So let us start derivation. We have already derived number of modes of oscillation lying in the frequency interval nu to nu plus d nu. ये हम already derive कर चुके हैं. CL यहाँ पे जो है इस एक्सप्रेशन में जो CL है, it denotes speed of longitudinal waves, and this CT, it denotes speed of transverse waves, because in 3 dimensions we can have both longitudinal wave as well as transverse wave. Now longitudinal wave की एक ही polarization है, so it has got 1 above it, it has got 1 here, but the transverse wave can have 2 polarization, so it has got 2 above it. So already we have derived this expression for the total number of modes of oscillation. Capital V, which is here in the expression, it denotes physical volume of the lattice. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करें तो we will get the total number of modes, and that total number of modes should be equal to thrice n, where n is the total number of atoms in the entire solid. लेकिन जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, we have to integrate equation number 1 over all the allowed frequencies. तो that means कि we have to integrate equation number 1. चूंकि इसमें variable frequency है, तो frequency will go from 0 up to a maximum frequency, which is the Debye frequency, और इसको हम nu d से denote करते हैं. It denotes this nu d denotes the maximum frequency in the Debye model, and it is called Debye frequency. So let us substitute equation number 1 in equation number 2, and let us start. First of all, let us see if we draw a graph of density of states with respect to frequency. So since we have got here nu square, equation number 1 में आप देखें, the density of states varies as square of the frequency. So we will get a parabolic graph. As you can see, this is a parabolic graph. So we have to increase the value of frequency from 0 but up to a maximum nu d by frequency. उसके आगे नहीं जा सकते. So this is the graph. So area under the graph will give me this integral, because integration g nu d nu, it gives the area under the graph, and that equals thrice n, which is the number of modes. So let us substitute equation number 1 in equation number 2. जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 पाई v, और ये जो ब्रैकेटेड टर्म है स्पीड्स की, तो it will get out of the integration because it's a constant. So we are left with the integration of nu square, the square of frequency. तो इसकी जो integration होगी, that will be
nu cube by 3, and the limits of integration are 0 to nu d. तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1/3 हम आगे रखेंगे, तो पहले हम न्यू को वैल्यू देंगे अपर लिमिट, सो विच इज न्यू डी एंड अ क्यूब, देन माइनस फिर हम न्यू को लोअर लिमिट वैल्यू देंगे विच इज 0 का क्यूब, सो दैट मीन्स वी गेट न्यू डी क्यूब डिवाइडेड बाय 3. तो इसको हम इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल की जगह we will use this nu d cube by 3. So that's it. तो यहां से हमें न्यू डी क्यूब के लिए एक्सप्रेशन मिलती है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 से याद रखेंगे, एंड इसी तरह हमें एक और एक्सप्रेशन आगे चल के जरूरत पड़ेगी 9n बाई न्यू डी क्यूब, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे, because we will need both equation number 3 as well as equation number 4. अच्छा, ये भी हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक ऑसिलेटर. वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस व्हाइल डिस्कसिंग आइंस्टाइन्स मॉडल. तो दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक ऑसिलेटर. लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इन अ गिवन इंटरवल न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, तो वी हैव टू सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल ऑसिलेटर, दैट इज ई न्यू. Then what is the total number of modes in this frequency interval nu to d nu, that is g nu d nu. This is the number of modes. So this gives me the energy of oscillators in a given interval. लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि what is the total energy over all the allowed frequencies, so we have to integrate above equation over all the allowed frequencies, and the allowed frequencies are from 0 up to a maximum limit nu d. So let us substitute the values of E bar, that is the average energy of an atomic oscillator, from equation 5, and g nu d nu, this is our equation number 1, the number of modes of oscillation in the frequency interval nu to nu plus d nu. So when we will substitute, we will get this expression. So again, the variable of integration is frequency nu. तो हम देखेंगे कि क्या क्या हम आउट ऑफ द इंटीग्रेंट कर सकते हैं. तो इसमें आप देखें कि 4 pi v, this is constant, and 2 by ct cube plus 1 by cl cube, this is also a constant. They have got nothing to do with frequency, so we can take that out of the integration. So we are left with then the integral 0 to nu d h nu cube divided by e raised to power h nu by kt minus 1. So this is what we have to integrate. So we have to integrate this to get the energy. अच्छा, इसमें हमने एक और इसमें हम थोड़ी सिंपलीफिकेशन करेंगे. We will use equation number 4, because equation number 4 जो है that उसमें हमने 4 pi v into this bracketed term, this was equal to 9 times n by nu d cube. This is equation number 4. तो इसको हम use करेंगे, तो we will get total energy of the solid as equal to this much. अच्छा, this is the energy of the solid when it contains n atoms. चूंकि molar specific heat में we have to consider energy of 1 mole, तो इसमें इस expression में जो ये n है, this n here, इस n की जगह हम लेंगे Avogadro's number, यानी the number of atoms in 1 mole of the solid, so that फिर जो हमारी ये energy है, this will not be energy of the solid, this will be energy of 1 mole of the solid.
So in place of n, the total number of atoms in the atomic solid, we will substitute here Avogadro's number Na. Then we will get energy of 1 mole of the solid. So doing that, we get this expression. Dear students, this is our second lecture on Debye model of specific heat. So today we shall derive a general formula for specific heat according to Debye model. फिर हम इसके स्पेसिफिक केसेस देखेंगे कि हाई टेम्परेचर रेंज में इसका कैसा बिहेवियर रहता है, लो टेम्परेचर रेंज में इसके लिए क्या एक्सप्रेशन मिलती है, एंड देन वी शैल ड्रॉ ग्राफ फॉर स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर, and we shall compare the theoretical prediction with the experimental data, and finally we shall conclude our today's lecture with drawbacks of Debye model. So let us start. कल हमने यहाँ पे स्टॉप किया था. We got expression for energy of 1 mole of solid this much. तो यहाँ से मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए एक्सप्रेशन अगर हमने डिराइव करनी है तो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो इसमें हम देखते हैं कि दिस फैक्टर, this whole factor does not depend on temperature. इसी तरह जो h nu cube है, this also does not depend on temperature. तो अगर डिफरेंशिएशन होगी तो वो इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर की होगी जो डिनोमिनेटर में है. तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो पावर है वो डिनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर में वो पावर -1 हो जाएगा, और उसी की हमने डिफरेंशिएशन करनी है. तो लेट अस स्टार्ट. सो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस exponential function term which has got power -1. तो इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो इसका पावर है, this power will get multiplied here, और इसका एक पावर कम होके -2 बनेगा. तो वो तो हुई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म. उसके बाद जो इनसाइड फंक्शन है उसकी अपनी इम्प्लिसिट या इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी. तो पहले तो इसकी डिफरेंशिएशन होके पावर बने प्रोडक्ट में आएगा -1 और इसका पावर बनेगा -2. उसके बाद जो ये इंटरनल फंक्शन है, दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड -1, अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी. तो इसकी डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की तो वापस आएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन माइनस और 1 की डिफरेंशिएशन होगी 0. But then we will have to multiply with the differentiation of this power of this exponential function. So that is here. We have to differentiate the power of exponential function. अच्छा, इसको differentiate करने के लिए we see कि h nu divided by the Boltzmann constant. This whole factor is a constant, so it will get out of the differentiation. तो फिर डिफरेंशिएशन किसकी करनी होगी? 1/t. इस t को डिफरेंशिएट करने के लिए उसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर बनेगा -1. तो दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप. तो हियर वी सी के वी हैव टू डिफरेंशिएट we have to differentiate this t raised to power -1, और इसकी डिफरेंशिएशन आएगी -1 into t raised to power -2. So with that we are done with the differentiation. तो इसमें हम देखते हैं कि -1 and -1 will go. h यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे h का एक और पावर है, so it is h square. न्यू फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे उसका एक और पावर है, तो न्यू का पावर बनेगा 4. और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसका पावर -2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसका पावर 2 बनेगा प्लस, लेकिन ये डिनोमिनेटर में रहेगा. इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को न्यूमरेटर में ही रहने देते हैं. एंड h जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो जो h स्क्वायर है इट विल गेट आउट ऑफ इंटीग्रेशन. इसी तरह टेम्परेचर जो है T, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इट विल बिकम 1/t स्क्वायर.
और चूंकि वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, तो दैट विल आल्सो गो आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. तो दैट मीन्स दिस इज व्हाट वी गेट एच स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी था टी स्क्वायर. तो ऑल दिस विल रिमेन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रल के अंदर सिर्फ वो फैक्टर्स रहेंगे विच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, जिनमें कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी की टर्म है. तो इक्वेशन नंबर 7 इज द जनरल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट एज गिवन बाय डीबाई मॉडल. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. तो इसके साथ हम फर्दर काम नहीं करेंगे. स्पेसिफिक हीट, उसका बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर्स, एट लो टेम्परेचर्स, उसके लिए हम वापस इक्वेशन नंबर 6 पे जाएंगे. तो उसके लिए हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिफाइन व्हाट इज डी बाई टेम्परेचर. So we have already defined what Debye frequency is. Debye frequency is the maximum value of frequency of lattice vibrations that can pass through the lattice. This is the upper limit. अच्छा, Debye temperature को हम कैसे define करेंगे? Well, we shall make an equation like this. एक साइड पे हम एनर्जी के लिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. On one side, for example, left hand side, हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एंड ऑन द अदर साइड हम क्वांटम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फॉर एनर्जी. इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट, द एनर्जी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, और यहां पे हम डी बाई टेम्परेचर यूज करेंगे, थीटा डी. सो दिस इज द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी. क्वांटम एक्सप्रेशन क्या है एनर्जी के लिए? That is Planck's constant multiplied by frequency, और यहाँ पे हम d by frequency यूज करेंगे. So that is how we define d by temperature. अच्छा, यहाँ से हमें d by temperature के लिए एक्सप्रेशन क्या मिलेगी? थीटा d will be equal to h into nu d divided by the Boltzmann constant. So we can define this Debye temperature as the product of Planck's constant with Debye frequency divided by Boltzmann constant. So that is how we define the Debye temperature. That will be our equation number 8. तो equation number 6 के साथ ही हमने काम करना है. तो वहां पे वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी. तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ है. तो टू मेक आवर जॉब इजियर, वी विल डिफाइन हियर अ डायमेंशनलेस पैरामीटर x. We define it as the ratio of h nu to kt. Now h nu, this is also energy, kt, this is also energy. So we are taking a ratio of two similar quantities. That's why x is a dimension less parameter. तो if x has this much value, अगर मैंने x का maximum value देखना है, यहां से इक्वेशन नंबर 9 से अगर मैंने x का मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो मैंने देखना है कि राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी. तो मैंने फ्रीक्वेंसी का भी मैक्सिमम वैल्यू लेना है, and the maximum value of frequency allowed in Debye model is the Debye frequency. So that means कि if I will have to see what is the maximum value of x, जिसको हम x max से डिनोट करेंगे, तो राइट हैंड साइड पे हमें फ्रीक्वेंसी की जगह इसका मैक्सिमम वैल्यू यूज करना पड़ेगा. दैट इज द Debye फ्रीक्वेंसी. सो दैट इज इक्वेशन नंबर 10. इसमें हम अगर इक्वेशन नंबर 8 यूज करेंगे कि जो ये h into nu d divided by Boltzmann constant है, this is by definition our Debye temperature. So that means जो maximum value of x है, it will be given by the ratio of Debye temperature to the actual temperature of the solid. Now listen, this t is variable, but this theta d, Debye temperature, it is characteristic of a particular substance. इसका value एक ही होगा for a given substance, but this t can vary. Temperature can go from 0 up to a very large number.
इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 9 हम फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को अपनी जगह पे रखेंगे तो ये जो kt है इट विल गेट मल्टीप्लाइड टू x और h जो है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 9 we get expression for frequency as kt by h into x. We will take q power on both sides. So we will get nu cube equals kt by h, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, होल पावर 3 into x क्यूब्ड। इसी तरह हम यहाँ पे न्यू का डिफरेंशियल भी देखना चाहेंगे तो वी विल डिफरेंशिएट हियर। तो इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमें dx मिलेगा। सो दैट इज द डिफरेंशियल फॉर फ्रीक्वेंसी। सो d न्यू विल बी इक्वल टू kt by h into dx। एंड वन मोर थिंग, इक्वेशन नंबर 10 से अगर हम इसका q पावर लें, पहले तो हमें इक्वेशन नंबर 10 से डी बाई फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी kt by h into x max। तो इसका हम q पावर लेंगे न्यू d क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू kt by h होल पावर 3 into x max का क्यूब। इसमें हम इक्वेशन नंबर 11 यूज करेंगे कि x max की जगह हम यूज करेंगे थीटा d बाई t। तो इसका क्यूब वी कैन सी दैट यहाँ न्यूमरेटर में t का क्यूब है वो यहाँ डिनोमिनेटर में इसके क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद थीटा d इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट होल क्यूब। और इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो यहां पर भी हमें इसका रेसिप्रोकल मिलेगा h डिवाइडेड बाय थीटा d इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होल रेज टू पावर 3। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये सारे फैक्टर्स हमें इक्वेशन नंबर 6 में चाहिए। और चूंकि इक्वेशन नंबर 6 में हम चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टू अ डायमेंशनलेस पैरामीटर x। तो since we define x is equal to h nu by kt, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके जो लिमिट्स हैं इट गोज फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू विच इज न्यू d, द d by frequency। तो हमने देखना है कि when x is 0, when frequency is 0, उस टाइम x का वैल्यू भी इस इक्वेशन से 0 ही आएगा। तो that is the lower limit। when nu equal 0 which is the lower limit, तो उस वक्त x का वैल्यू भी 0 बनेगा। And the upper limit is when nu the frequency has got its maximum value nu d, तो उस वक्त x का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा जिसको हम x max से डिनोट करते हैं। तो which is equal to the ratio theta d by t। तो that is the upper limit when nu equals nu d, x equals its maximum value equal to theta d by t। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमने इक्वेशन नंबर 6 में यूज करने हैं। अब यहाँ पे देखें कि e raised to power h nu by kt, ये जो h nu by kt है we had put this equal to x। इसी तरह यहाँ पे जो न्यू है वो हमें मिला था kt by h into x, लेकिन इसका क्यूब है तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट्स क्यूब पावर। सो न्यू क्यूब की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह हमने डिफरेंशियल फॉर फ्रीक्वेंसी भी इवॉल्वेट करके रखा है, दैट इक्वल्स kt by h into dx। दिस इज द वैल्यू फॉर डिफरेंशियल। और इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिनोमिनेटर में है न्यू डी क्यूब, यानी दिस इज 1 by न्यू डी क्यूब। तो इसके लिए भी हमने एक्सप्रेशन इवॉल्वेट करके रखी है, दैट इज h डिवाइडेड बाय थीटा d इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होल क्यूब। तो ये सब वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑल्सो व्हेन न्यू इज 0
x भी 0 मिलता है, एंड व्हेन न्यू इज मैक्सिमम वैल्यू, तो उस टाइम हमें x का भी मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो ये सब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी गेट दिस। तो यू कैन सी कि यहाँ पे के टी बाई एच का तीन पावर्स हैं, यहाँ पे उसका एक और पावर है, तो इसका पावर 4 बनेगा, वी कैन टेक दैट आउट। इसी तरह जो यहाँ पे h है वो भी बाहर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ x क्यूब बाई e रेज टू पावर x माइनस 1 रहेगा, एंड विद इट इज डिफरेंशियल। यहाँ पे हमने 1 बाई न्यू डी क्यूब का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किया है, तो यू कैन सी कि h जो है, यहाँ पर h का एक पावर है, यहाँ पे h के 3 पावर्स हैं, तो इट विल बिकम h रेज टू पावर 4। अलबत्ता वो h रेज टू पावर 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में h का पावर 4 है। तो थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई करेंगे, तो वी गेट दिस मच। इसी तरह यहाँ पे जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसके 3 पावर्स हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के 4 पावर हैं, तो न्यूमरेटर में एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बचता है, और उसके साथ यहाँ पे एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी है, तो द प्रोडक्ट एवोगाड्रोस कांस्टेंट इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यहाँ पे न्यूमरेटर में टेम्परेचर का पावर 4 है, डिनोमिनेटर में डी बाई टेम्परेचर का पावर क्यूब है, 3 पावर्स हम इकट्ठे लिखेंगे, सो इट विल बिकम टी बाई थीटा डी होल रेज टू पावर 3, और एक पावर जो टेम्परेचर का है वो हम अलग रखेंगे, तो उसकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो आप आगे जाके देखेंगे। तो दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द सॉलिड एज पर द Debye मॉडल। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 12 का बिहेवियर देखेंगे एट हाई टेम्परेचर्स एंड एट लो टेम्परेचर्स। सो दिस इज द जनरल फार्मूला। फर्स्ट वी शैल कंसीडर हाई टेम्परेचर, सो दैट मीन्स T इज वेरी लार्ज, T टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा, जो x हमने डिफाइन किया है h nu by kt. Now since this t tends to infinity, that means the whole value of x, चूंकि इसमें t डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का वैल्यू काफी ज्यादा है, the overall value of x is very very low. The value of x tends to 0, and when the power of एक्सपोनेंशियल फंक्शन टेंड्स टू 0, इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स। सो दैट मीन्स ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे है, इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे 1 प्लस एक्स, लेकिन इसके साथ -1 भी है, दैट -1 एंड +1 विल गो, यू विल गेट ओनली x इन डिनोमिनेटर, राइट। लेकिन न्यूमरेटर में x क्यूब है, so we are getting x cube by x, that is x square. So that means simply x square को हमने इंटीग्रेट करना है, और x square की इंटीग्रेशन इज सिंपली x cube by 3, that's it. फिर हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी अप्लाई करने हैं, तो we have to integrate x square, तो that it becomes x cube by 3. Of course, जब हम उसको लिमिट देंगे तो दैट विल बिकम x max क्यूब बाई 3। अच्छा, x max क्यूब खुद किसके बराबर है, थीटा डी बाई टी, तो इसका क्यूब, तो इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 12 में यूज करेंगे। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रैंड इज सिंपली 1/3 इंटू थीटा डी बाई टी क्यूब। तो जब हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू कैन सी ओरिजिनली फंक्शन में t बाई थीटा डी का क्यूब था, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दिस 3 विल मेक दिस 9 एज 3, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ एनर्जी एज thrice RT. So this is the expression for
energy for 1 mole of solid as per Debye model at high temperatures. अब अगर यहां से हम स्पेसिफिक हीट के लिए एक्सप्रेशन देखना चाहें तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. So the molar specific heat will be given by differentiating this expression with respect to temperature. So we will get rid of this T. So we get 3R. What is 3R? 3R is the same value as given by the classical theory Dulong-Petit law. It is the same value as given by the Dulong-Petit law. So what is the physical significance? At high temperatures, the Debye model for specific heat reduces to our classical value given by Dulong-Petit law. Now let us check how Debye model behaves at low temperatures. This is again the general formula for 1 mole, for energy of 1 mole of solid as per Debye model. Acha, now we are considering high values of, low values of temperature. So T tends to 0. Acha, हमने define X किया है. It is H nu by KT. Now when this T tends to 0, जो overall value of X है, that will tend to infinity because in temperature जो है ये denominator में है. अच्छा, what is X? X is the power of exponential function. Now when this X is very, very large, this exponential function is also very large. When the power of exponential function is very large, the value of exponential function is also very large. So ये जो EX है, this will be very large as compared to this one. तो इस 1 को हम यहाँ पे neglect कर सकते हैं. So we can neglect this exponential function. Also, X max, which is equal to H nu D by KT. When this T tends to 0, this X max tends to infinity. So that means यहाँ पर जो ये upper limit है, इसकी जगह भी हम infinity use करेंगे. So, well, with those substitutions, our equation number 12 becomes this. अच्छा, ये 1 को हम neglect नहीं करेंगे because ये जो integral है, it is a standard integral and its value is pi raised to power 4 by 15. So integral का जो value है इस equation number 12 में, इसकी जगह हम substitute करेंगे pi raised to power 4 divided by 15. So then we get the expression for 1 mole of energy as 9RT into T by theta d cube into integral का value है pi raised to power 4 by 15. So we get this expression for energy of 1 mole of the solid but at low temperatures. तो यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक हीट के लिए वैल्यू मिले तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस. तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये टर्म जो है दिस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट्स अ कांस्टेंट. और जो टी रेज टू पावर 4 है, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 4 into टी रेज टू पावर 3, राइट? तो दैट 4 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 3, इट विल बिकम 12. So that is how we get the expression for specific heat of a solid. तो ये सारा जो bracketed term है, it is a constant. और variation with temperature हम देखते हैं T cube. So that means at low temperatures, the specific heat of a solid is directly proportional to the cube of temperature, and this is the famous D by T cube law.
and it states that the specific of a solid substance at extremely low temperatures is directly proportional to the cube of temperature of the absolute temperature of the substance. So this is how Debye model of specific heat behaves at low temperatures. So at high temperatures, specific heat equals thrice R, which is the classical value as given by Dulong and Petitla. And at low temperatures, the specific heat according to Debye model varies as the cube of absolute temperature of the substance. Now let us plot the graph of Debye model to versus temperature. And इस ग्राफ में जो सॉलिड कर्व आप देख रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक, दैट इज द ग्राफ ऑफ Debye मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. और इसमें जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, दे रिप्रेजेंट दोज रेड डॉट्स. Those red dots, they represent the experimental values determined for material silver. So you can see the Debye expression matches with experimental values at all temperatures, starting from 0 up to room temperature and even beyond room temperature. So that means the Debye model is in good agreement with the experiment over whole temperature range. Now let us compare the graphs of Debye model with the Einstein model and Dulong-Petitla. According to Dulong-Petitla, the specific heat is always equal to thrice R, irrespective of the temperature. So Dulong-Petitla ka jo graph hai, that is this horizontal straight line shown by dots. अच्छा, जो इसमें solid curve है, this solid curve, this denotes the graph of Debye expression, और जो इसमें dashed है, this dashed curve denotes graph of Einstein's model. तो Einstein model जो है वो Debye model से थोड़ा नीचे है. तो इसकी वजह मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि आइंस्टाइन मॉडल में हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम आइंस्टाइन मॉडल में आइंस्टाइनस फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. बाकी फ्रीक्वेंसीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं. जबकि Debye मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी Debye फ्रीक्वेंसी. इसीलिए Debye मॉडल में चूंकि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए Debye मॉडल में जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू आएगा वो आइंस्टाइन मॉडल से ज्यादा ही होगा. So that is the graph for the three models of specific heat. We will conclude today's lecture with a few drawbacks of Debye model. Although Debye model is a very nice model for specific heat, and it successfully explains specific heat, but it too has a few drawbacks. Number one, के Debye model में we don't take all the frequencies. इसमें हम ये assumption लेते हैं कि there is a maximum limit to frequency, which is called Debye frequency. So that means इसमें हम 0 से लेके एक particular value of frequency तक जाते हैं. तो उसके बाद जो greater values of frequency है, उनके लिए Debye model valid नहीं है. So that means Debye model is valid for smaller values of frequency, या हम कहेंगे longer values of wavelengths. अच्छा, ये मसला क्यों आता है?
बिकॉज Debye मॉडल में हम सॉलिड को कंटिन्यूअस मीडियम मानते हैं, और सॉलिड को हम कंटिन्यूअस मीडियम तभी मान सकते हैं जब एक वेव जो लैटिस में पास होगी उसकी वेवलेंथ कम से कम एटॉमिक स्पेसिंग के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए. That's why we can take only long wavelengths or smaller frequencies into consideration in Debye model. Number two, there is no justification why there are only 3n modes of vibration in Debye model. इसी तरह Debye model does not take into account the dispersion. It says the speeds of longitudinal waves, transverse waves, they are independent of the wavelengths. Actually, at low frequencies that is true, but not true for all frequencies. जितना जितना frequency increase होगी, तो the speed will depend on the wavelength. That means dispersion relation, dispersion phenomena will come into the picture. So this makes Debye curve deviate little bit from the experimental data. According Debye cutoff frequency should be different for transverse and longitudinal, लेकिन ये हम सेम मानते हैं सबके लिए. इसी तरह Debye मॉडल में सिर्फ लैटिस स्पेसिफिक हीट कंसीडर की गई है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट इसमें कंसीडर नहीं की गई है. दैट हैज बीन इग्नोर्ड इन Debye थ्योरी. Debye टेम्परेचर जिसको हम कांस्टेंट मानते हैं, बट इट आल्सो वेरीज अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 10%. And an experiment by Blackman reported that the Debye T cube law holds only in lower temperature region. कि जब तक temperature is less or equal to 1/50th of the Debye temperature, यानी only up to the values of 1/50 of Debye temperature or less than that. जब तक बॉडी का टेम्परेचर, सॉलिड का टेम्परेचर इतना रहता है, तब तक Debye T cube law valid रहता है. Once the temperature exceeds this, then Debye model deviates from the experimentally determined values. So with this,